السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس القرآن for رمضان المبارک day 19. Today dars will start from the verse 23 of chapter 2. آج کا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ Chapter 2 Al-Baqarah verse 23. Ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. O children of Israel, remember my favor. O children of Israel, remember my favor which I bestowed upon you, and that I exalted you above all the nations of the time. Verse 24. Vattaqu yawman, and guard yourselves against the day when no soul shall serve as a substitute for another soul at all, nor shall any ransom be accepted from it, nor any intercession avail it,
nor shall they be helped. Verse 25. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. And remember when his Lord tried Abraham with certain commandments which he fulfilled. He said, I'll make thee a leader of men. Abraham asked, and from among my offspring, God said, my covenant does not embrace the transgressors. Here are some explanations. Ibtila. This implies two things. First, a learning of the state or condition of the object and becoming acquainted with what was unknown of the case thereof. Second, the manifesting of the goodness or badness of a object. Kalimat is plural of kalima, which means a commandment. Imam. Imam means any object that is followed, whether a man or a book. Masabatan linnas. Verse 26. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. And remember the time when we made the house of resort for mankind and a place of security. We said, take ye the station of Abraham as a place of prayer, and we commanded Abraham and Ismail, saying, purify my house for those who perform the circuit and for those who remain therein for devotion and those who bow down and full prostrate in prayer. What is Masaba? Masaba signifies a place paying a visit or which entitles one to reward or resort of men. The Kaaba, as some traditions say, and as hinted by the Quran itself, was originally built by Adam and was for some time the center of worship for his progeny. Then in the course of time, people became separated into different communities and adopted different centers for worship. Abraham then rebuilt it, and it continued to remain a center of worship for his progeny through his son Ismail. But with the lapse of time, it became virtually converted into a house of idols, which numbered as many as 360, almost the same as the number of days in a year. At the advent of the Holy Prophet, however, it was again made the center of worship for all nations, the Holy Prophet having been sent as a messenger to all mankind to unite those who had become separated after Adam into one common human brotherhood. The Kaaba, and for the matter, the town of Mecca, is declared to be a place of peace and security. Mighty empires have crumbled and large tracts of land laid waste since the dawn of history. But the peace of Mecca has never been materially disturbed.
The religious centers of other faiths have never claimed and have in fact never enjoyed such peace and immunity from danger. Mecca has, however, ever remained a place of security and safety. No alien conqueror has ever entered it. It has always remained in the hands of those who have held in it reverence. Verse 27. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. And remember when Abraham said, My Lord, make this a town of peace and provide with fruits such of its dwellers as believe in Allah and the last day. Allah said, And on him too who believes not will I bestow benefits for a little while, then will I drive him to the punishment of the fire, and an evil destination it is. Verse 28. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. And remember the time when Abraham and Ishmael raised the foundations of the house, praying, Our Lord, accept this from us. For thou art the all-hearing, the all-knowing. Here is a note. There is a question. Was Abraham the founder or only the rebuilder of the Kaaba? Is a question that has given rise to much discussion. Some hold that Abraham was the first builder of the place, others trace its origin to Adam. The Quran and the authentic traditions favor the view that even prior to erection of a building on this site by Abraham, some sort of structure did exist, but it had fallen into ruins and only a trace of it had remained. The word al-Qawaid in the verse shows that the foundations of the house were there which Abraham and Ishmael had raised. Moreover, Abraham's prayer at the time he had separated from the child Ishmael and his mother at Mecca, which our Lord have settled some of my children in the uncultivable valley near thy sacred house, shows that the Kaaba had existed even before Abraham had settled his wife and son in the valley of Mecca. The Hadith also supports this view. Historical records too lend support to the view that the Kaaba is of antique origin. Historians of established authority and even some hostile critics of Islam have admitted that the Kaaba is an ancient place and has been held sacred from the immemorial. Diodorus Siculus, Sicily, speaking of the region now known as Hejaz, says that it was specially honored by the natives and adds an altar is there built of hard stone and very old in years too, to which the neighboring people thronged from all sides.
These words must refer to the holy house of Mecca, for we know of no other which ever commanded the universal homage of Arabia. Tradition represents the Kaaba as from time immemorial the sense of pilgrimage from all quarters of Arabia. Verse 21-29. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. O Lord, make both of us submissive to Thee, and make of our offspring a people submissive to Thee, and show us our ways of worship, and turn to us with mercy, for Thou art of returning with compassion and art merciful. Verse 23. And our Lord, raise up among them a messenger from among themselves, who may recite to them thy signs, and teach them the book and wisdom, and may purify them. Surely thou art the mighty, the wise. There is a note. The verse serves as a summary of the subject matter of the entire surah, which constitute not only its enlargement but treats the various subjects in exactly the same order in which they have been mentioned in this verse. That means first come the signs, then the book, then the wisdom of the law, and last of all the means of national progress. It may be interest to note here that the Quran speaks of two separate prayers of Abraham, one about the progeny of Isaac and the other about that of Ishmael. The former prayer is mentioned in chapter 2 verse 125 and the latter in the verse under comment. In his prayer about the progeny of Isaac, Abraham asks that imams or reformers may be raised from among them, but he makes no mention of their special work or status. They are ordinary divine reformers who will follow one another for the reformation of the Israelites. In his prayer in the present verse, however, he prays to God to raise among his progeny a great prophet with a specific mission. This difference indeed constitute a marvelously true picture of the two branches of the house of Abraham. In making mention of the two prayers of Abraham in verses 125 to 130, the surah alludes to the fact that Abraham did not only pray for the prosperity of the children of Isaac, but also for the prosperity of Ishmael, his firstborn. The offspring of Isaac lose the gift of prophethood on account of their evil deeds. The prophet promised and prayed for in the present verse must therefore belong to the other descendants of Abraham, who were the children of Ishmael, in order to point out that the expected and promised prophet was to be an Ishmaelite. The Quran has quite appropriately made mention of the construction of the Kaaba by Abraham and Ishmael and of the prayers offered by Abraham
for the prosperity, for the posterity of his eldest son. Verse 130, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. And our Lord raise up among them a messenger from among themselves, who may recite to them thy signs, and teach them the book and wisdom, and may purify them. Surely thou art the mighty, the wise. That's the end of verse. Now I'll go to Urdu section of this verse. आज का दर्स सूरतुल बकरा की आयत नंबर 123 से शुरू होता है। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ऐ बनी इसराइल, मेरे उस एहसान को जो मैं तुम पर कर चुका हूँ याद करो, और उस बात को भी कि मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। ये तमाम जहान बनी इसराइल के ज़माने के जहान हैं, वरना ज़माने के लिहाज से या बाज़ मकामात के लिहाज से उम्मत मुहम्मदिया को सब उम्मतों से अफजल करार दिया गया है। इसलिए अल आलमीन से मुराद उस ज़माने के जहान या बनी इसराइल जहां मौजूद थे उन जहानों का इसमें जिक्र है। वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और उस दिन से डरो जब कोई शख्स कतन किसी दूसरे शख्स का कायम मकाम न हो सकेगा, और ना उससे किसी किस्म का मुआवजा कबूल किया जाएगा, और ना कोई सिफारिश उसे फायदा देगी, और ना उनकी मदद की जाएगी। आयत 125, वाइज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु, और उस वक्त को भी याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने बाज बातों के जरिए से आजमाया और उसने उनको पूरा कर दिखाया। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुझे यकीनन लोगों का इमाम मुकर्रर करने वाला हूँ। इब्राहिम ने कहा, और मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइयो। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, मगर मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। इसमें नोट है, ला यनाल अहद ज़ालिमीन, यानी औलाद इब्राहिम में से जो जालिम हो जाएंगे उनको इमाम नहीं बनाया जाएगा। वाइज आयत 126, वाइज जाल नल बैता मसाबत लिन्नास, और उस वक्त को भी याद करो जब हमने उस घर यानी काबा को लोगों के लिए बार बार जमा होने की जगह और अमन का मकाम बनाया था, और हुक्म दिया था कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ, और हमने इब्राहिम और इस्माइल को ताकीदी हुक्म दिया था कि मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक और साफ रखो। यहाँ पे एक नोट है, अल मसाबा ताजुल उरूस में इसके माने लिखे हैं, अल मौदिउल्लज़ी युसाबु इलैहि ऐ युरजअु इलैहि मर्रतन बाद उखरा, यानी वो जगह होती है जिसकी तरफ लोग बार बार आए, एक के बाद दूसरी बार या बार बार वहां आए। और मसाबा सवाब की जगह के लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है, दोनों माने इसके लिए जा सकते हैं। आयत 127, वाइज काला इब्राहिम रब्बि जल हाजा बलदन आमिनन, और उस वक्त को भी याद करो जब इब्राहिम ने कहा था कि ऐ मेरे रब इस जगह को एक पुरअमन शहर बना दे, और इसके बाशिंदों में से जो भी अल्लाह पर और आने वाले दिन पर ईमान लाएं उन्हें हर किस्म के फल अता फरमा। इस पर अल्लाह ने फरमाया, और जो शख्स कुफर करे उसे भी मैं थोड़ी मुद्दत तक फायदा पहुंचाऊंगा, और फिर उसे मजबूर करके दोजख के अजाब की तरफ ले जाऊंगा, और ये बहुत बुरा अंजाम है।
आयत 129। रब्बना वजलना मुस्लिमैन लक। ये वो दुआएं हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के मौके पे की थीं। ऐ हमारे रब, और हम ये भी इल्तिजा करते हैं कि हम दोनों को अपना फर्माबरदार बंदा बना ले, और हमारी औलाद में से भी अपनी एक फर्माबरदार जमात बना, और हमें हमारे मुनासिब हाल इबादत के तरीक बता, और हमारी तरफ अपने फजल के साथ तवज्जो फरमा। यकीनन तू अपने बंदू की तरफ बहुत तवज्जो करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। और ऐ हमारे रब, हमारी ये भी इल्तिजा है कि तू इन्हीं में से एक ऐसा रसूल मबूस फरमा जो उन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाए, और उन्हें किताब और हिकमत सिखाए, और उन्हें पाक करे। यकीनन तू ही गालिब और हिकमतों वाला है। इस आयत में अरेना मनासिकना है। अरबी में मनासिक का लफ्ज़ है जिसके माने हमारी, मनासिकना के माने है हमारी इबादत, इबादात। लेकिन हमारी से मुराद चूंकि ये है कि जो हमारे लिए मुनासिब हो, इसलिए यहाँ मुनासिब हाल के अल्फाज के साथ तर्जमा किया गया है। ये याद रहे कि रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, जो फरमाया यहाँ एक खास रसूल का जिक्र है जिसका वादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने किया हुआ था, और वो बनु इस्माइल में से हैं। अगरचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और जगहों पे वादे का जिक्र है जहां उनकी औलाद में से आम मुस्ले या रसूल बनाने का हुक्म भी है, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की के दोनों बेटों की नस्लों से वादे थे, और वो वादे अल्लाह ताला ने अपने मौके के लिहाज से पूरे फरमाए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी अंबिया आए जो आम नबी थे, खास अंबिया के मकाम पर वो नहीं पहुंचे थे या कोई शरी नबी नहीं थे। लेकिन हजरत इस्माइल की औलाद में से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई, जिसका जिक्र इस आयत में खास तौर पे मिल रहा है। आज का दर्स इसी पे ख़त्म होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।